Good morning, students. Today we will start another topic of this chapter, fractions, that is comparison of fractions. Okay, it's very important part, like which you have to use in many of the questions in class 6th also, 7th also, and so on. Okay, so let's see how we can compare fractions. Before comparing fractions, I would like to tell you about two types of fraction. Number one is like fractions. सबसे पहले हम बात करेंगे लाइक फ्रैक्शंस. ओके, लाइक मीन्स एक तो अच्छा लगने वाला लाइक होता है, एंड अनदर मीनिंग ऑफ लाइक इज सेम. ओके, सो लाइक फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस विच हैव सेम डिनोमिनेटर, and one fraction cannot be said as like fraction. Say, like by looking at one fraction, I can say whether it is proper, improper, or mixed fraction. But for like fractions, we have a group of fractions, and if in a group of fractions, if all the denominators are same, okay, if all the denominators are same, then the fractions are called like fractions. और इसी का just opposite क्या है? Unlike fractions. It's very simple. In a group of fractions, group can be of two also. In a group of fractions, if denominators are different, then they are called unlike fractions. Okay, so like fractions की अगर मैं example दूं आपको, so we can have 3/2, 5/2, 7/2. All the denominators are 2. ठीक है, this is one example. One more example I can have 2/7, 5/7. So these are the examples of like fraction. Okay, this is one pair and this is another pair. Unlike fractions के example 3/2, 2/7. Different denominator, they are unlike fractions. One more example you can see 3/6. Okay, 5/8. They are also unlike fractions. So very simple one it is. If denominator same, then like fractions. If denominator different, then unlike fractions. Now why we are studying about like fractions and unlike fraction? Because it plays a very important role in comparison of fraction. Now just look at the like fractions. ठीक है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, if I will ask you 3/2 is bigger or 5/2 is bigger, you can easily say that 5/2 is bigger. Why? Denominator is same, only you have to compare the न्यूमरेटर. तो आप बोल दोगे 5/2 सेम है. सिमिलरली 7/2 इज बिगर देन 5/2, और आई कैन से 5/2 इज स्मॉलर देन 7/2. सो इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, it becomes very easy for us to compare the fraction. Similarly, in this two, which one is bigger? 5/7 is bigger than 2/7. Okay, so when the denominators are same, we can easily compare the fraction. But is it easy to say whether 3/2 is bigger or 2/7 is bigger? Once you will say that numerator 3 is bigger here, and here you can say that denominator 7 is bigger. So we can't compare two fractions until and unless the denominators are not same. So this is the first criteria for comparison of any fraction. Okay, so what is the first criteria? Either the denominator should be same, या तो denominator same होना चाहिए, should be same, or the numerator should be same. But in both the case, the technique is different. How it is different? I will show you. देखिए, अगर denominator same है तो बहुत easy हो सकता है. Let's take this example only. 3/2, 5/2, or 7/2. Okay, now denominators are same, so we can say
that 3 by 2 is smaller than 5 by 2, which is smaller than 7 by 2. Okay, this is the increasing order, ascending order. In descending order, the order will be reversed and sign will also reverse. अगर ये यहाँ पे क्या था, डिनोमिनेटर सेम था, so it becomes simple for us to compare. We can only see whichever numerator is bigger, that fraction is bigger. Now let's make it like this: 2 by 3, 2 by 5 and 2 by 7. Now in this case, what you can see, the denominators are different, but the numerators are same. So again we should say the same कि 2 by 7 बड़ा होगा, फिर 2 by 5 होगा, फिर 2 by 3 होगा. Okay, this I will explain you by taking one example. मैं आपको इस चीज को बहुत ही आराम से समझाने की कोशिश करती हूँ. Now listen carefully. सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या रोल होता है. इफ यू रिमेम्बर दैट इन एक्सरसाइज 7.2 whenever we were converting improper to mixed fraction, हमने ये समझा था जो न्यूमरेटर है that comes in the form of dividend और जो डिनोमिनेटर है that comes in the form of divisor. ये मैंने आपको बताया था. तो ये आपको पता है कि ऊपर चाहे नंबर बड़ा हो चाहे नंबर छोटा हो, वो हमेशा अंदर ही आएगा. जैसे यहाँ पे 3 अंदर आएगा, 2 बाहर आएगा, और यहाँ पे 2 अंदर आएगा और 3 बाहर आएगा. ठीक है. अच्छा, इसका अगर आप प्रैक्टिकल मतलब समझेंगे तो क्या मतलब है. इसका मतलब है 3 चीजों को 2 लोगों में डिवाइड करना है. ठीक है. और इसका क्या मतलब है, 2 चीजों को 3 लोगों में डिवाइड करना है. ठीक है. अब इस चीज को हम और मैं आपको दूसरे तरीके से समझाना कोशिश करती हूँ. फ्रैक्शन का मतलब तो आप समझ गए कि जो ऊपर है वो अंदर जाएगा. ठीक है. मतलब उस चीज को हमें डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर में जो भी है उससे डिवाइड करना है. ये बात क्लियर है आपको. नाउ जस्ट इमेजिन आपका बर्थडे है, यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे. ओके, योर पेरेंट्स हैज बॉट अ केक फॉर यू. केक आया आपके घर में. सपोजिंगली यू हैव प्लान्ड कि घर में हमारे 10 गेस्ट आएंगे. ओके, द नंबर ऑफ गेस्ट कमिंग टू योर हाउस इज 10. तो आप केक तो एक ही आएगा. ठीक है. तो आप उस केक के 10 पीसेस करोगे. हाउ मेनी पीसेस वी विल डू? वी विल डू 10 पीसेस ऑफ द केक. ठीक है. और इस केक की मतलब हर एक पर्सन को 1/10 शेयर मिल जाएगा. अब सपोजिंगली अचानक क्या हुआ, एक केक था, उसको आपने 10 लोगों में बांटा. सो एवरीवन विल गेट दिस मच शेयर. ओके. नाउ सपोजिंगली द नंबर ऑफ गेस्ट इंक्रीज्ड. 10 की जगह 20 गेस्ट आ रहे हैं अब आपके घर में. ठीक है. तो अब आपको इसका भी आधा आधा करना पड़ेगा. सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, सबको और छोटा पीस मिलेगा. तो अगर आपका जैसे न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो ये चीज छोटी होती जाएगी. ठीक है. जैसे यहां पे अगर आपको मैं पूछूं 1/10 बड़ा है या 1/20 बड़ा है, तो यहाँ पे क्या न्यूमरेटर सेम है. आप ये नहीं बोल सकते कि 1/20 बड़ा है. 1/20 इज स्मॉलर. वाई? बिकॉज हियर द वन थिंग इज डिवाइडेड अमॉन्ग 20 पीपल. So each person will get a very small share, and here one thing is divided into 10 people. So comparatively this group will get a bigger share. I hope आपको मेरी बात समझ में आ रही हो. आप इस वाले ये तो आपको इजीली आ जाएगा. अगर डिनोमिनेटर सेम है then we don't have to use our brain. सिंपल दिखेगा, जो बड़ा है वो बड़ा है, छोटा है वो छोटा है. लेकिन अगर न्यूमरेटर सेम है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है केक के बारे में सोच के कि केक तो एक ही आया है आपके घर में. ठीक है. अगर गेस्ट बढ़ जाएंगे, दीज आर द नंबर ऑफ गेस्ट. जो डिनोमिनेटर में लोग हैं वो क्या है, आपके गेस्ट हैं. इफ द नंबर ऑफ गेस्ट विल इंक्रीज देन द शेयर ऑफ केक विल डिक्रीज. इतना बस आपको दिमाग में रखना है कि अगर आपको न्यूमरेटर सेम दिया हुआ है देन यू हैव टू थिंक द स्टोरी ऑफ केक. कीप दिस थिंग इन योर माइंड. ओके. सो दिस इज द कंपेरिजन फॉर लाइक फ्रैक्शन. ओके. These are not like fractions. Like fractions की एक ही definition है that the denominator should be same. Okay, these are unlike, but this is some another kind that numerators were same. So we can compare this also directly. But if in the situation numerator is also not same and denominator is also not same,
These are unlike fractions and we have only one option to compare this, that we have to make both the denominators equal. डिनोमिनेटर्स को मुझे इक्वल करना होगा और डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने की एक ही टेक्निक है, दैट इज टू फाइंड द एलसीएम ऑफ बोथ द डिनोमिनेटर्स. That we will learn when we will do the questions. Okay, then I will explain you how you can make the denominators equal and how we can compare two unlike fractions. Comparing like fractions is very easy, but when it comes to comparing unlike fractions, then we have to take LCM and the process becomes quite long. Okay, so let's see the questions. Okay, now we have understood that how we can compare fractions and what is the basic criteria for comparing the fractions. So let's do some exercise questions now so that our concepts will be more clear. First of all, we will discuss question number 1. In question number 1, we have been given some diagram. Okay, write shaded portion as fraction. सबसे पहला काम तो यही करना है. So सबसे पहले वाले पार्ट में एक का है 3/8, another one is 6/8, another one is 4/8 and the last one is 1/8. This I have written the fractions for shaded portion. Now arrange them in ascending and descending order using correct symbol. अगर मैं ascending order को मैं A से represent कर रही हूँ, okay, ascending order की अगर मैं बात करूं मतलब छोटे से बड़ा. Now see, all the denominators are same, 8 8 8 8, very easy. Okay, which is the smallest one? 1/8. उसके बाद 3/8, then 4/8 and then 6/8. Descending will be just opposite, 6/8. Sign will be reversed. How you will remember the sign, that which sign is for ascending and which is for descending? जो बड़ा होगा उसकी तरफ आपको मुंह खोल के रख देना है. Then 4/8, okay, and then 3/8 and then 1/8. So this is the order. I hope this is very easy because these were like fractions as all denominators were same. Now look at the B part. In B part again, first of all we will mention the shaded portion. 8/9, then it is 4/9, third it is 3/9 and last one it is 6/9. Okay, so again we have to arrange in ascending and descending order. Ascending order मतलब छोटे से बड़ा. 3/9 will come first, then 4/9, then 6/9 and then 8/9. And in descending order, just opposite, 8/9 will come first, then 6/9, then 4/9, at last 3/9. So these questions are very easy. Easily you can arrange the ascending and descending order. Similarly in C part, show 2/6, 4/6, 8/6 and 6/6 on the number line. Okay, now this is related to exercise 7.2. Number line पे दिखाना है. Okay, this is 0, 1, 2. Okay, denominator is 6. Denominator हमारा कितना है? 6 है. तो हमें 6 इक्वल पार्ट्स करने हैं और उसके लिए हमें 5 लाइंस बीच में बनानी होंगी. 1, 2, 3, 4 and 5. Similarly 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, here I am writing 2. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 equal part. 1, 2, 3, 4, 5, 6 equal parts. Now we have to show it on number line. This is 0/6, 1/6 and this is 2/6. Then 3/6 and this is 4/6. 5/6, 6/6 is 1, 7/6 and this one is 8/6 and this is 6/6. Okay. Now put appropriate sign between the fraction given. अब नीचे आपको कुछ fractions दिए हुए हैं, उनके बीच में साइन बनाना है आपको. 5/6 and 2/6. Which one is bigger? For sure this is bigger. 5 बड़ा है. Like fractions are these. 3/6 and 0. इन दोनों के बीच में अगर आपको कंपेयर करना हो, so see, 3/6 यहाँ आएगा और 0 यहाँ है. The number which is coming on the right is bigger. So 3/6 is bigger. Okay.
देन नेक्स्ट इज 1/6 एंड 6/6, या फिर इसको आप 0/6 भी लिख सकते हो. 3 बड़ा है सो इट इज बिगर. 1/6 एंड 6/6, दिस इज बिगर. लास्ट वन 8/6 and 5/6. Which one is bigger? Simply 8/6 is bigger. So when the denominator is same, hardly it takes a second to identify that which one is bigger. But the problem arises when the denominator is not same. And question number 2 is also very easy. And that also denominators are same. Okay, either denominators are same or numerators are same. तो A पार्ट में आप देखेंगे 3/6 and 5/6. Now we can see that denominator are same, so 5/6 is bigger. B part में आप देखोगे 1/7 and 1/4. Now here denominator is not same, but numerator is same. तो numerator में मैंने बताया if the numerator is same, we have to think the story of cake. If the number of people will be more, then share of piece will be smaller. So number of people is more here in 1/7. So this is smaller. Okay. Similarly in C part 4/5 and 5/5. So this one is easy. This is bigger. D part 3/5 and 3/7. Now again denominator is different but numerator is same. Again think the story of cake. लोग बढ़ जाएंगे तो pieces का share कम हो जाएगा. Okay, so in this way we have done 2 questions of exercise. And third is make 5 more such pairs and put appropriate sign. So third question you will do it by yourself. Okay, you can make it, everyone can make pairs by themselves, any numbers you can make. So do it by yourself. And from question number 4 we will do in the next session. Like today we have done the questions related to like fractions only. We have compared only like fractions. Now in next class we will learn how we can compare unlike fractions also. So this is all about today's class. And the next topic we will discuss in our next class. Thank you, students.